two personal comments. It's become more relevant and more important than the issue of, justice for the many Nirbhayas and, the killing in Dadri. See, I think that I really feel, that as a society and especially the media, आप लोग सब media के हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे issues हैं हमारे सामने. Unfortunately होता क्या है, human nature ऐसा है कि जहां issues होते हैं जो controversial होते हैं या किसी किस्म से negative होते हैं, उस पे हमारा ध्यान ज्यादा जाता है. मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं. ये ह्यूमन टेंडेंसी है. इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज नहीं बनता. ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज नहीं बनता. Let me just convey what I'm saying. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much you'll agree, in general. And in general, that is the trend that's happening today. So I'm saying if we all decide to focus on positive things, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. As a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Amir sir, my question to you. On your left. Yes. Sorry. So you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyameva Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था. तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था. जब मेरे पास टाइटल दंगल ओनली. अच्छा. हाँ, मतलब वन द 4 लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, डिज्नी की टीम से, तो उसका टाइटल दंगल ही था. तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो अप्रोप्रिएट. दंगल इज एक्चुअली आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? दंगल का मतलब राइट्स नहीं है. वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स. एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती. कुश्ती, अ बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल. और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है. मैं उसके बोल आपको 1-2 लाइन सुनाता हूं, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है. मां के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग-पग प्यारे दंगल दंगल. सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल. तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल. हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स. मिस्टर सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके फ्रंट में हूं आलोक, कि ये एसोसिएशन कैसा रहा? क्योंकि इसके पहले आपकी तरफ से द जंगल बुक वगैरह काफी अच्छा कर रही हैं ऑल लेवल पे, तो विद आमिर एंड दंगल. मतलब जंगल बुक कर रहे हैं तो फिर आमिर की क्या जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर, पहले जंगल फिर दंगल, इस तरीके. Well, this happens to be our 9th association with Amir actually. We were just counting the other day as producers, co-producers, distributors in some capacity or the other. So it's nothing new for us to want to be associated with Amir in some capacity. I think when a member of our creative team, actually Divya Rao, who's sort of unfortunately not here today, the idea really came from her. She read about this story and she thought it would make a great film. And when she came to us with it, it sounded like something that was so inspirational, such a wonderful story that really had to be told. And we had the good sense to go to someone like Nitesh and tell him about the story. And he also fell in love with it. And from that point on, the journey started. And he wrote a beautiful script. As he said just now, the only person we had in mind to go to was Amir. And it all fell into place really, really well. So really happy that it happened. Amir, hi, this is Faridun from Borodangama Center. Hi.
The poster is looking amazing. My question to you is that you've already always stood for women rights and the girl child and a lot of other things as well. When we look at the poster, somehow we see all the 4 girls, somehow, look somewhere. Don't you feel that even if a girl has to portray like a tough role, it can retain the femininity as well? Yeah, of course. You're absolutely right. And I don't believe that a girl or a woman has to go easy or reduce her femininity and be more like a male to be strong. I don't believe that at all. And nor does the film believe that. The only reason that their hair is short is because it's from a practical point of view of wrestling. So when you see the film, you'll understand that. And are you doing Rakesh Sharma's biopic? There are reports that you're doing Rakesh Sharma's biopic. You know, I've not signed any film yet. Are you planning? I've just begun to read scripts and explore the possibilities. I have not signed anything But yet. is Rakesh Sharma something that you're exploring? You know, until I sign a film, I can't tell you because it's not fair. It's not fair, I'll tell you why. Because there are a lot of people approaching me. And they're approaching me with confidence that I will not let them down. So when someone narrates a script to me, I don't tell anyone कि मैं भाई so and so director ने script लेके मेरे पास आए. क्योंकि अगर मैंने नहीं की, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यार आमिर ने वो फिल्म क्यों नहीं की, रिजेक्ट की, नहीं बन रही है वो फिल्म, क्या उसकी स्क्रिप्ट ठीक नहीं थी, क्या नहीं था. I don't want that. It's not fair. When someone comes to me, he comes to me in faith. And I like to uphold that faith. So, whichever script I hear, you will never come to know कि मैं किसकी सुन रहा हूँ, किसकी नहीं सुन रहा हूँ. So I will neither deny nor admit to your question. Thank you. Amir, over here. Mr. Tiwari, this question is for you. Can I ask? We'll come to you. Question is for Amir. Okay. We'll come to you. Okay, of course, Amir has partly replied to that. Is it true that there are no songs in Dangal and you'll only have a promotional music video with Amir and his 4 daughters? No, that's incorrect. We have quite a few songs in the film. We have 6 songs. At least And it 6. might become 7. Yeah. Why Amir, 7? Well, that's the number of situations that we possibly have. So right now we already have 6 in the film. So it has 6 songs, yes. Okay, thank you. Amir, the Hi, question Amir. is regarding your weight in the movie. How do you gain the weight and how do you reduce the weight? See, कैसा आपने gaining पूरा is easy. process किया? वजन बढ़ाना बहुत आसान है. आप खाइए, पीजिए, वो सारी चीजें जो हमको बोला जाता है मत खाओ. जलेबी, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डीप फ्राइड, वेफर्स, समोसे, बटाटा वड़ा, जितनी चीजें जिसमें तेल ज्यादा हो, तो वो सारी चीजें जो बहुत ही टेस्टी होती हैं, जो हम खा नहीं पाते, तो वो मुझे पूरी छूट मिली थी. 6-8 महीना मैं दबा के खा रहा था और इतना मैंने एंजॉय किया. मैं क्या बताऊं आपको, बहुत एंजॉय किया. मतलब जहां पे जाऊं लोग बोल रहे हैं अरे यार मैं ये नहीं खा सकता, नहीं खा सकता. अरे खाओ यार, कुछ नहीं करके मैं ले लेता था. तो केक खा रहा हूं, ये खा रहा हूं. मतलब लाइफ में इतना मैं फ्री कभी मैंने फील नहीं किया. ये तो हमेशा डाइट पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आई रियली एंजॉयड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दैट एंड स्टेइंग फैट. आई हैड टू स्टे फैट, यू नो, थ्रू द शूटिंग ऑफ द फिल्म. और फिर वो वक्त आया जब मुझे कम करना था, तो ऐसी बैंड बजी है मेरी. उफ, इट वाज रियली डिफिकल्ट. बट आई हैड अ ग्रेट टीम विथ मी. आई हैव टू टेल यू, आई वांट टू एक्नॉलेज माय टीम ओवर हियर. एक तो मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर. वो अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर सेंटा क्रूज में डॉक्टर धुरंधर का नाम आपने शायद सुना होगा, सीनियर डॉक्टर धुरंधर, उनके बेटे हैं. और उन्होंने, क्योंकि मैं सीनियर डॉक्टर धुरंधर के साथ कई सालों से था एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, as a person who used to consult him. उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई, तो luckily I met Nikhil. He was in India that time, and he said I'll take over from where dad has left. तो उससे मुझे ताकत मिली, क्योंकि you need a nutritionist who knows about food properly. उस knowledge के साथ मुझे पूरा faith था कि यहाँ मैं wrong नहीं जा रहा हूँ. Whatever he tells me will be the correct thing. So, and I involved him in the, before we started the shooting. Even in the weight gain and in the weight sustenance, he was still part of that, creating the diet for me. And then the weight loss began from the 10th of January, I think 10th January se mera weight loss shuru hua. So, he was very critical in this whole process. The other 2 people who were critical were my trainers. एक मेरे trainer हैं, उनका नाम है राकेश, और राकेश मेरे साथ थे शुरू में जब हमने शुरू किया ट्रेनिंग. और ट्रेनिंग में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं मोटा हूं लेकिन मेरी ट्रेनिंग फिर भी जारी है. आपको वो मसल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि चर्बी इतनी ज्यादा है उसके ऊपर कि मसल्स का शेप आपको नजर नहीं आएगा.
लेकिन वो जरूरी है क्योंकि जब मैं मसल लाना चाहूंगा तो फिर अगर मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं की है तो देन टू बिल्ड मसल टेक्स मच लॉन्गर. So it is important I train right through this process. Even when I'm fat, I'm training. And it is very difficult to train when you're fat. 97 kilos and you're doing squats and you're doing, bench press and you're doing, it's very difficult. Khair, तो मैंने वो, Rakesh was with me. And then Rakesh is actually Salman's trainer. वो regularly सलमान की ट्रेनिंग करता है. तो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई बुला रहे हैं, सुल्तान की शूटिंग शुरू हो रही है. तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भाई के पास जाओ. तो वो भाई के पास गए और he trained Salman. And उनकी जगह पे राहुल भट्ट came to train me. भट्ट साहब के जो बेटे हैं. तो राहुल भट्ट trained me for 3-4 months just shooting के दौरान. And then once सुल्तान की शूटिंग complete हो गई, then Rakesh came back. So last 3 months again Rakesh has trained me. So between Rakesh and Rahul, they both really managed my schedule really well. They really pushed me to the extreme. Both are very good trainers. Both are excellent, very knowledgeable trainers. So with Dr. Nikhil Rakesh, I had 3 people who were a strong team to help me through this very difficult phase of changing the shape of your body. In fact, there's another thing I need to thank Salman for here, is the title, Dangal. I don't know if you know that. क्योंकि दंगल टाइटल स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ था आपने, लेकिन जब हमने पता किया तो वो स्क्रिप्ट का जो राइट्स थे वो पुनीत जी के पास थे, पुनीत इसार. So I knew that Salman is very close to Puneet, and I called up Salman one day and said कि यार मुझे दंगल टाइटल चाहिए यार, can you arrange a meeting between Puneet and me? So actually Salman called up Puneet and said यार उनको टाइटल चाहिए, जबकि वो सुल्तान बना रहा है. लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो सेम रेसलिंग फिल्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सलमान ने एक्चुअली हमको हेल्प किया. दंगल का टाइटल मिलने में सलमान का बड़ा हाथ है. एंड ही called up Puneet, and then Puneet and I met, and Puneet was very sweet. He said कि यार मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो आप लोग इस्तेमाल कर लो. So he gave us the title, and that's how we got the title actually, Dangal. Hi Siddharth.